करते हैं कार्यक्रम के उस पड़ाव पर जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, UCCI एक्सीलेंस अवार्ड 2022। UCCI एक्सीलेंस अवार्ड के उद्देश्य, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया, जूरी सदस्य और इसकी संपूर्ण यात्रा से परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनीष गोधा जी को। आप मैसर्स अद्वैया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और CEO हैं। एक प्रौद्योगिकी पेशेवर और उत्साही मनीष जी विशेष रूप से उन तरीकों में रुचि रखते हैं जिनसे प्रौद्योगिकी व्यवसायों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सके। UCCI की एक्सीलेंस अवार्ड कमेटी के रूप में इन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। मनीष जी प्लीज आइए। Just one second. Sure. So it's a great pleasure to be at a point and be at this place where this institution and UCCI is an established, but then I'm talking about UCCI Excellence Awards as an institution that has taken hold. It's the 6th iteration that we are witnessing today. And as an institution, it has really made its place, and there have been certain goals that we took upon as we started with the UCCI awards. And I do believe that with the effort that UCCI Executive Committee, its leadership, the participants, the jury, they have been putting in, with those efforts, we really have been able to accomplish a lot of goals that we had set for ourselves as UCCI Excellence Awards. Now, let me talk about that a little bit, in the sense that whenever we talk about these kind of business awards, we generally and somewhat justifiably, we have a position of a cynic. Why another award? There are so many awards that are happening. There are so many awards which are, I would say, email awards. You know, you get an email, you send 25,000 rupees and award would be there. So there, in that flood of awards, in that ocean of awards, why this one more award? And why is this award helpful in the kind of goals that businesses have, in the kind of goals that UCCI has? So that's what is really important to understand, and I'm sure many of you as UCCI members, as participants in the awards, have really understood that. And that's why you are here, that's why you participate, that's why this process has been successful. Now, these awards are for businesses, and that's one difference. This is for businesses with growth mindset. Businesses who believe that they can change. Businesses who believe that measurement can help. Businesses who believe they can learn from and teach to other businesses. In the panel discussion, we talked about thinking big. Just after the panel discussion, Kothari Saab, and in fact during the panel discussion, Surana Saab talked about the importance of coming together. In fact, we talked about coming together and everything. We thought that what is the basis? Can we form a basis? Can we form a framework in which businesses of Udaipur can come together and grow together? And that's what UCCI Excellence Awards are about. So, when we talk about UCCI Excellence Awards, the key principle is excellence. And we think of excellence in business. Excellence of business cannot be one thing. There was this question about how do we measure somebody that they help with overall growth of the business. The point there is, when we are talking about overall excellence of the business, what should we be thinking about? So these awards, and the way we have been able to design these awards with the guidance of lots of experts, our jury members, committee members, and the UCCI leadership, is that we have been able to take, to the extent possible, a comprehensive view of a business. A view which consists of both leading and lagging indicator. We recognize the fact that when we are
assessing a business for awards, we would only be assessing historical performance. But then when we are looking at historical performance, can we look at potential that the business has? Can we find out aspects of business? Can we learn more about that business, which tells about how the business will perform in future? Would it sustain itself? We are taking both the inside view, how businesses looks about its operations, and also the outside view, whether that business communicates itself well. How is the public at large perceiving that business? We are taking not just the financial indicators, but also non-financial indicators in this. So we have tried to make it comprehensive. While we are trying to make it comprehensive, we are also trying to make it objective as possible. As many indicators that we can take, as many things that we can evaluate in a fair way, in a consistent way across the businesses, across a business category as possible. And one of the key principles of the awards, apart from being comprehensive, being objective, is to ensure confidentiality. We know that while businesses can learn from each other, there are things that businesses would want to keep to themselves, justifiably so. So how do we continue to learn from each other, continue to teach to each other, but still keep the things which are confidential in the business? And that's how we have structured our process. Our process, if we talk about that, our process starts from expression of interest. As I said, these awards are for businesses with growth mindset. Businesses who want to bring themselves to the forefront. Businesses who want to express their desire to improve. So businesses who are expressive. So these are not the awards where we nominate a business. These are the awards where businesses come forward to be assessed, to be subjected to that assessment, and then, so it starts from an expression of interest. When we look at those expressions of interest, we ask just a few simple questions. Entire process is online, entire process is data-driven. We start with that step. As we receive expressions of interest, that allows us to essentially look at some of the, what I would say, clerical aspects of applications, in the sense whether those are the categories that we would be able to justifiably, properly assess, whether those are businesses who kind of fall into our categories. We assess those kind of aspects, and then we create a long list. And those businesses in that long list, they are then requested to provide a way more detailed information. In our opinion, and in my personal opinion, that particular process, that particular piece is the gist, is the key, is the soul of the awards. That's where we ask businesses to look at their own operations, their organization, their work in a comprehensive way. We ask about financial performance, we ask about management team, we ask about HR practices, we ask about what they have done, for example, in the COVID period specifically for their workers. We ask about their R&D efforts. We ask about their social responsibility aspects. We also ask about their safety records. We ask about what is their attitude about legal compliance. So we try and take all of that information in the hope that not just this information would allow us to assess those businesses objectively and fairly and comprehensively, but also would allow those businesses to look at their business in a comprehensive way. And that is a very heartening feedback that we have received from many businesses, that filling that form has been an exercise of self-discovery, has been an exercise which has led those businesses to improvement. So that's the second step. Then we take that information, try to bring that to as much objective numbers as possible. Then this entire tabulation, entire data processing is given out to a professional chartered accountant, an auditor, and no official from UCCI, no executive member, no secretariat member is involved in that process. So the entire data
from that online uh, data collection goes to the chartered accountant, an independent chartered accountant who looks at the data, who tabulates it, who verifies it, and who does a scoring, overall scoring based on that. Based on that scoring, we create a short list. That short list is where we take another step. We ask some of our UCCI executive members to go and visit those businesses, gain their impressions. It is not just about how businesses are talking to us as UCCI, but it is also about how UCCI reaches out and learns about the member businesses, learns about the businesses who are interested in growing, improving, and sharing their experiences. So the executive members, many of them, they take time out, and thanks to them, and they go to these businesses, and generally they receive great feedback, great insights from those businesses. Culmination of all of that is when we have a jury meeting. Our jury, and we have been very fortunate about that, our jury has had eminent people from academia, administration, and businesses who have helped through the process. So the jury meeting, and this year we had the privilege of working with Mr. Salahuddin Ahmed, who is the ex-chief secretary, Janat Shah from IIM Udaipur, director of IIM Udaipur, Bhagwat Singh Babel comes from industry, and so does Akhilesh Joshi, ex-CEO of Hindustan Zinc, who comes from industry. So a very varied mix, people who have great experience, great perspectives on businesses, they come together. They look at the various tabulations that have been done by auditor, the forms that have been filled in, the responses that companies have provided, the visits that have happened. They look at all of them, and then we come to a conclusion about who in that particular category would be deserving the award, the UCCI Excellence Awards. So in that sense, this is a very rigorous process. In that sense, it's a very comprehensive process. In that sense, very objective process with entire confidentiality that we have done. And that leads to assessment of these awards. So while, if you happen to win these awards, that's definitely a statement of your excellence. Those awards have not come cheap, in the sense that those awards has taken a lot of your effort, but at the same time, a lot of effort and analysis and process and rigor from the jury side, from the data processing side that has happened. But at the same time, even if you do not win the award, you have contributed immensely to not just the process, but also to a body of knowledge, which we are sure would help UCCI design its programs, will help all of us learn from each other. One of the outcomes that we produce is every participant of the awards, of the entire process, they have shared some data with us. It's our obligation to give something back to them. We give them a comprehensive report which benchmarks their performance in all of those various aspects against the peer group that they belong to. And the feedback that we have received, many of you, the businesses have been able to use that. Some of you have not been able to. We would be very happy to help with that. But then with that feedback what we have received is, that really gives a perspective. One of the things that many people talked about, that being in Udaipur. Now, this is a clause, this is a phrase that kind of comes as a qualification of sorts. Being in Udaipur, what is the meaning of that clause? We feel that being in Udaipur, expectations from us as businesses is lower. No, that is not. Our data, our awards, the benchmark reports that you would receive will tell you that being in Udaipur is not a qualification. Being in Udaipur is not an excuse for lower performance. You would see that the performance and the excellence in Udaipur's businesses is exemplary, is something to be learned from. When the jury deliberated on these awards for this year, for example, they have taken a very, very detailed view. And
and to me, that's a high point because I have the privilege of working with jury when these awards and they take these decisions. And the jury has been very perceptive. They have been able to identify aspects such as, how a business have been able to turn around in a difficult period. They identify those kind of things. They looked at things like their businesses who improved their profitability even when they had struggles with their top line. So there are businesses who, for example, in COVID period, they faced a lot of stagnation or degrowth, but then they still carried on, they still continued with some of the processes. Those are the kind of aspects that jury is perceptive enough to bring that out, and they actually made those as some of the aspects that led to the determinations of the awards that we would just be celebrating. And of course, I had the privilege of working with the leadership, UCCI leadership. That has been a great experience, helped through the awards process. At the same time, the UCCI awards committee members, their contribution has been very, very useful. And of course, the executive members who took time out to visit the shortlisted companies and shared their insights and that. And so thank you, and I hope this process is as helpful as we have tried to make it today. Thank you. थैंक यू मनीष, थैंक्स अ लॉट। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी अवार्ड सेरेमनी को। मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुरोध करती हूं अवार्ड वितरण के लिए। अवार्ड वितरण में हमारी पहली कैटेगरी है सर्विसेज मीडियम एंटरप्राइज। इस कैटेगरी के स्पॉन्सर हैं GR अग्रवाल सर्विसेज अवार्ड मीडियम एंटरप्राइज, और फाइनलिस्ट हैं अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ उदयपुर, अरावली हॉस्पिटल उदयपुर, मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब उदयपुर। और इस कैटेगरी के विनर हैं अरावली हॉस्पिटल उदयपुर। डॉक्टर आनंद जी गुप्ता को इनवाइट करती हूँ स्टेज पर। स्वर्गीय डॉक्टर SB गुप्ता, वो नहीं है यहाँ पे सर, स्वर्गीय डॉक्टर SB गुप्ता जिन्होंने 1972 में अनिश्चित रहे हैं, वह एक दूरदर्शी डॉक्टर थे और हमेशा संकटग्रस्त लोगों के बीच मुस्कान फैलाने में विश्वास रखते थे। डॉक्टर गुप्ता ने लोगों को मानवीय स्पर्श के साथ सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपना विश्वास को जीवित रखा। आइए अब चलते हैं अवार्ड श्रृंखला के दूसरे सोपान पर, सर्विसेज स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके स्पॉन्सर हैं डॉक्टर अजय मुर्दिया इंदिरा IVF सर्विसेज अवार्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मैं इस अवार्ड को प्रदान करने के लिए डॉक्टर अजय मुर्दिया जी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। इस अवार्ड के फाइनलिस्ट हैं आदर्श शिक्षा समिति उदयपुर, बदाला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, उदयपुर ब्लॉग बाय विविर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, वर्बोलैब्स लैंग्वेज OPC प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। और इसके विनर हैं, इस अवार्ड के विनर हैं वर्बोलैब्स लैंग्वेज OPC प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। मैं कुंजल जी डांगी को इनवाइट करती हूँ ये अवार्ड रिसीव करने के लिए। वर्बोलैब लैंग्वेज OPC प्राइवेट लिमिटेड एक ऊर्जावान भाषा समाधान कंपनी है
पिछले 4 वर्षों में 60 प्रमुख वैश्विक भाषाओं में 200 से अधिक ग्राहकों के लिए 100 मिलियन से अधिक शब्दों का स्थानीयकरण किया है। 1200 से अधिक पेशेवर स्थानीयकरण विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम है। गुणवत्ता और उन्नत तकनीक के 2 स्तर वर्बो लैब्स लैंग्वेज को सर्वोत्तम स्थानीयकरण सामग्री को तेजी से और आसानी से वितरित करने में सहायता प्रदान करी है। आइए अब चलते हैं हम कार्यक्रम के तीसरे सोपान पर। जो तीसरा अवार्ड है वो है CSR अवार्ड्स। CSR अवार्ड वेदांता हिंदुस्तान जिंक CSR अवार्ड, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री जया रमन जी विश्वनाथ जी को कि वह स्टेज पर पधारें। इस अवार्ड के फाइनलिस्ट हैं JK टायर्स। इस अवार्ड के फाइनलिस्ट हैं JK टायर्स इंडस्ट्री लिमिटेड, कांकरोली राजसमंद, आदित्य सीमेंट वर्क, चित्तौड़गढ़। और विनर है JK टायर्स इंडस्ट्री लिमिटेड, कांकरोली राजसमंद। JK टायर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड भारत के अग्रणी टायर निर्माताओं में से एक हैं, जो कार, बस, ट्रक, टायर, बायस एंड रेडियल टायर सहित उत्पादों की एक श्रृंखला के साथ सर्वश्रेष्ठ टायरों का उत्पादन कर रहे हैं। कंपनी भारत में एक ट्रक बस के रेडियल टायर के उत्पादन एवं बिक्री में निर्विवाद रूप से मार्केट लीडर है। एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम इस हॉल को गुंजायमान करते हैं। आइए अब चलते हैं चौथी कैटेगरी के अवार्ड पर, सोशल एंटरप्राइज अवार्ड। स्पॉन्सर हैं सिक्योर मीटर्स PP सिंघल सोशल एंटरप्राइज अवार्ड। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संजय सिंघल साहब को। उनको अगले अवार्ड में बुलाऊंगी। फाइनलिस्ट हैं कोसवी आवरण प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड उदयपुर, राजस्थान श्रम सारथी एसोसिएशन उदयपुर और साधना उदयपुर। और विनर हैं, इस अवार्ड के विनर हैं कोसवी आवरण प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड। कोसवी आवरण प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड उदयपुर में भारत स्थित एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना सन 2015 में हुई। कोसवी आवरण प्रोड्यूसर्स कंपनी की मुख्य गतिविधि है बागवानी उत्पादों का उत्पादन, जिसमें शामिल है फूलों, फलों या सब्जियों के लिए बीज, अन्न, रूट, कटिंग पौध, कंदफूल आदि। अच्छा सॉरी, ये जो मैटर है उसमें गलती के कारण मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। कॉसवी आवरण गारमेंट कंपनी है। मैं अलका जी को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। आइए अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंटरप्राइज अवार्ड की तरफ। स्पॉन्सर हैं वंडर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड माइक्रो एंटरप्राइज और इसके फाइनलिस्ट हैं स्पेक्ट्रम टेक एंड फैब उदयपुर, वर्धमान मशीनरी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। और विजेता हैं वर्धमान मशीनरी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। मैं साहिल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वर्धमान मशीनरी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में खनन मशीनरी और इसके स्पेयर पार्ट्स की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनियों में से एक है। यह कंपनी वायर सॉ मशीन, LD मशीन आदि बनाती है।
गुणवत्ता उत्पाद तैयार कर सप्लाई करना इस कंपनी की विशेषता है। कंपनी के पास एक सुस्थापित अनुभवी प्रबंधन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेहतर उत्पाद प्रदान करना है। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में ही हम आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंटरप्राइज की ओर। इसके स्पॉन्सर हैं सिंघल फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड स्मॉल एंटरप्राइज, और मैं श्रीमती नंदिता सिंघल जी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ अवार्ड प्रदान करने के लिए। इस अवार्ड के फाइनलिस्ट हैं एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, मेडनेक्स बायोटेक लिमिटेड उदयपुर, मैराथन हीटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। मैडम प्लीज आइए। और विनर हैं, इस अवार्ड के विनर हैं मेडनेक्स बायोटेक लिमिटेड उदयपुर। डॉक्टर नीलम व्यास को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। मेडनेक्स बायोटेक लिमिटेड कंपनी WHO द्वारा प्रमाणित है। विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मेडनेक्स आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक रेंज ऑफ फॉर्मुलेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपका उत्साहवर्धन करते हैं। थैंक यू मैडम। आइए अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की श्रृंखला में आगे। इसकी अगली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग मीडियम एंटरप्राइज। और इस अवार्ड को प्रदान करने के लिए आरगेट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड मीडियम एंटरप्राइज को प्रदान करने के लिए मैं श्री कुणाल बागेला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, पायरोटेक वर्कस्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, कैंसर इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। और आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसके विनर कौन है। पायरोटेक वर्कस्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड उदयपुर। पायरोटेक वर्कस्पेस के बारे में हम अभी पैनल डिस्कशन में बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा परिचय देती हूँ। पायरोटेक वर्कस्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2006 में हुई थी। विश्व स्तरीय नियंत्रण कक्ष और नियंत्रण डेस्क सॉल्यूशन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी। मात्र 14 लोगों की एक छोटी सी टीम थी, जो अब 400 लोगों में बदल गई। मैन्युफैक्चरिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है मैन्युफैक्चरिंग लार्ज एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग लार्ज एंटरप्राइज के स्पॉन्सर हैं पायरोटेक-टेम्पसन मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड लार्ज एंटरप्राइजेस, और इसको प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ PS तलेसरा जी को। राठी साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, और CP तलेसरा जी को भी। आप कृपया मंच पर पधारें। पांडे साहब को भी बुलाना चाहती हूँ। आप सभी मंच पर पधारें। इसके फाइनलिस्ट हैं उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड उदयपुर, रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड उदयपुर, हार्मोनी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, सुविधा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। और इसके विजेता हैं उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड उदयपुर। उदयपुर सीमेंट वर्क्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे 1993 में निर्गमित किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय उदयपुर में है। कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट की एक सहायक कंपनी है, जो लगभग 4 दशकों से भारतीय सीमेंट उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम कमा रही है।
इनका वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 4500 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार था। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपका स्वागत करते हैं। संपूर्ण अवार्ड की प्रक्रिया में जूरी को बहुत ही मुश्किल हुई श्रेष्ठतर में से श्रेष्ठतम को छांटने में। तो मैं अब जितने भी फाइनलिस्ट थे उनका नाम अनाउंस करूंगी प्रशस्ति पत्र के लिए। कृपया आप मंच पर पधारें फाइनलिस्ट कंपनीज का। और मैं कार्यकारिणी समिति से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए। हम शुरू कर रहे हैं पहली अवार्ड से, मीडियम एंटरप्राइज, अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर और मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब उदयपुर। कृपया मंच पर पधारें प्रशस्ति पत्र के लिए। दूसरी कैटेगरी डॉक्टर अजय मुर्दिया इंदिरा IVF सर्विस अवार्ड स्मॉल एंटरप्राइज। इसके फाइनलिस्ट आदर्श शिक्षा समिति उदयपुर, बताला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, उदयपुर ब्लॉक बाय विविल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारें प्रशस्ति पत्र पाने के लिए। तालियों की आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। अगला अवार्ड वेदांत हिंदुस्तान जिंक CSR अवार्ड के फाइनलिस्ट है आदित्य सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। वेदांता हिंदुस्तान जिंक CSR अवार्ड के फाइनलिस्ट हैं आदित्य सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। अगली कैटेगरी है सिक्योर मीटर्स PT सिंघल सोशल एंटरप्राइज अवार्ड और इसके फाइनलिस्ट हैं राजस्थान श्रम सारथी एसोसिएशन उदयपुर और साधना। कृपया मंच पर पधारें प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए। अगली अवार्ड कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंटरप्राइज। अगली अवार्ड कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंटरप्राइज वंडर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड माइक्रो एंटरप्राइज के फाइनलिस्ट हैं स्पेक्ट्रम टेक एंड फैब उदयपुर। मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंटरप्राइज सिंगल फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड स्मॉल एंटरप्राइज के फाइनलिस्ट हैं
एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मैराथन हीटर प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। आपके प्रतिनिधि से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर पधारें। A big round of applause, please. आइए अब चलते हैं अगले पायदान पर। मैन्युफैक्चरिंग मीडियम एंटरप्राइज, आरगेट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड मीडियम एंटरप्राइज और इनके फाइनलिस्ट हैं एस्प्रिन स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर और टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। आपके प्रतिनिधियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। Pyotech-Tempsens मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड लार्ज एंटरप्राइज के फाइनलिस्ट हैं रामा फॉस्फेट लिमिटेड उदयपुर, हार्मोनी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, सुविधा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। मैं आपके प्रतिनिधिगण को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Speaking